जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला। प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में रख कर जोश बड़े शन शन में। कांपे शत्रु देख के मन में मिट जाए भय संकट सारा। मिट जाए भय संकट सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। Discipline is the backbone of a strong nation, and physical fitness is its foundation. Students from 7th and 8th are presenting the Kavayat, a well-coordinated display of strength, agility and precision. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग। यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग। यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने।
جائیں گے. پھول کیا چیز ہے تیرے قدموں پہ ہم بھیंٹ اپنے سروں کی چڑھا جائیں گے. اے وطن ہم کو تیری قسم تیری راہوں میں جہاں تک لٹا جائیں گے. اے وطن ہم کو تیری قسم تیری راہوں میں جہاں تک لٹا جائیں گے. میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن شانتی کا انتی کا پیار کا چمن اس کے واسطے نثار ہے میرا تن میرا من. اے وطن اے وطن اے وطن جانے من جانے من جانے من. میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن شانتی کا انتی کا پیار. Thank you, everyone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
It's indeed a privilege for us to express our heartfelt gratitude to our esteemed guest of honor, Mrs. Rubina Ali Khan. She is MA in History, Masters of Education, MSc in Psychology, Dassault English Language Trainer, Diploma in Counseling, Diploma in Fashion Arabic. She has an experience of 8 years of teaching in IB School, Fazlani Academy, Mobile. 7 years of teaching experience as a professor in B.Ed College. Paper corrector for National University exams. Passionate about training students in academic as well as life skills. Currently, she is practicing as a mentor and counselor at Mind Mental Therapy Center. I request our management member, Dr. Aisha Sheikh, to please present her the bouquet. Next, our guest of honor, Mrs. Ghazala Surya. She have been the head of the junior section, head of the history department, house mistress, ICSE board director, supervising examiner for ICSE examinations. Her hobbies are reading, traveling, and she is passionate about training teachers, students for various English skills like debates, elocution, creative writing. Currently, she is practicing as a mentor and wellness coach at Mind Mental Therapy Center. I again request a management member, Dr. Aisha Sheikh, to please felicitate her with a bouquet and memento. Now I call upon our head boy, Master Ayan Mirza from Standard 9th B, to felicitate our President, Dr. Mateen Sir. I also request Ayan Mirza, the head boy, to felicitate Dr. Khalik. Thank you. Next, I call upon our head girl, Miss Sawaina Falke, to felicitate our management member, Dr. Aisha Sheikh. Thank you, everyone. On this auspicious 79th Independence Day of our beloved nation, we gather here with heart filled with gratitude, voices brimming with pride, and spirits soaring high in the colors of our Tiranga. So now, let's begin this memorable celebration of our freedom with reverence, unity, and joy. Today, as we all are celebrating our 79th Independence Day, we also celebrating the talent, hard work, and the spirit of unity in our school. Every performance is a result of dedication, teamwork, and passion. So let us begin this beautiful journey together and fill this gathering with warmth, appreciation, and applause. Now, to express the essence of freedom and to hear a thoughtful and eloquent English speech, I would like to call Sayyid Jaza of Family Banai. Good morning to the respected members of management, principal, teachers, and my dear friends. Today, as we gathered here to celebrate Independence Day, I, Sayyid Jaza Hafiz, feel honored and privileged to stand before you and express not just my gratitude toward freedom we enjoy, but also the hopes and dreams we children carry for the future of our beloved India. Independence Day is not just the celebration of our past, it is also a reminder towards the responsibilities of building a better tomorrow. The famous quote, "At the stroke of midnight hour, will the world sleep, India will awake to life and freedom." This quote was spoken by our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on his historic Tryst with Destiny speech on the eve of India's independence. It captures a profound moment from a transition from a period of slavery and subjugation to a new era of self-governance, dignity, and liberty. Every year on 15th August, we remember our freedom fighters, their sacrifices, and their dream for free India. But today, I want to take a step further. I want to speak on India we children dream of, an India of the future. I want to live in India that leads the world in science, technology, and innovation. I want my country to be known not just for its history and culture,
but also for its cutting-edge research, space missions, and digital growth. I want to live in India, which is called as a developed nation, where every child gets quality education. No one is left behind, where every dream has a chance to come true. I want to see leaders who are wise, visionary, and educated. Leaders who talk about unity, progress, and peace, not hatred or division. I want a government that creates jobs, fights poverty, and works to ensure that every Indian feels safe, respected, and empowered. As mentioned in the Sahih Muslim Hadith number 1827, the most beloved of people to Allah on the day of judgment will be the just ruler. This reminds us that justice in leadership is not only important for a strong nation, but also beloved by Allah. I want to live in India, where we no longer hear of discrimination, where we all stand as Indian first, proud of our diversity, but united in our purpose. I dream of an India where a hospital cares for every life, school builds a strong future, and streets are safe for every girl and boy. Today, I'm not just celebrating freedom. I'm making a plea to all the elders. Please help us shape an India where our dreams are not limited by corruption, poverty, or hate. Please give us a nation where development is the goal and unity is our strength. Let us together build an India which is not just free, but fearless, fair, and flourishing. Jai Hind. मारे या कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हम नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आसमाना यार बाज हम चाल साज हम इश्क बाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले ये नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 Respected Principal Madam, teachers, and all my dear friends, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I am Mariam Karte from class 3rd A. हर एक जर्रे की दिलकशी में दमक रही है ज़मीर अपना, सदा महकती रही मिट्टी, उठाए जिससे खमीर अपना, बनी हुई है निशान मंजिल, तमाम तर जिसकी शाहराए, जवाब रखता नहीं जहाँ में, ये खित्ता है बेनज़ीर अपना, जवाब रखता नहीं जहाँ में, ये खित्ता है बेनज़ीर अपना. Today we have gathered here to celebrate a momentous event in the history of our country, that is Independence Day. On 15th August 1947, we got freedom from the British rule. Friends, we are fortunate that we are born in an independent India, where the minds are without fear and the heads are held high.
This became possible because of the brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Maulana Azad, who rose above the lines of caste and creed and sacrificed their lives for Mother India. It is important to remember that freedom was not achieved by one religion or one community alone. Millions of men, whether Hindus, Muslims, Sikhs, or Christians, fought together, dreamed together, and sacrificed their lives together. This day teaches us the power of unity. So, it is our responsibility to preserve and respect this freedom. I come from land of sages with culture rich from ages. I know value of zero. My soldiers are my hero. The martyrs paid the cause. I love my country most. Not Pandit, not Jat. I am an Indian first. Dear brothers and sisters, may God bless our great nation and may the flame of independence continue to guide us on our journey towards a bright future. वतन के जान सारे हैं, वतन के काम आएंगे. हम इस ज़मीं को एक रोज आसमां बनाएंगे. हम इस ज़मीं को एक रोज आसमां बनाएंगे. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. जय हिंद. Golden skies and fields of green, land of dreams and hopes unseen. Children laughing, voices ring, sing the song of freedom, sing. Mountains high and rivers flow, in our hearts the love will go. Unity in every beat, feel the rhythm, feel the heat. India, oh India, land of promise and of lights. India, oh India, shine so bright with all your might. Oh, 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 oh. Rich in culture, proud and free, from the mountains to the sea. Every child and every soul, together we achieve our goals. Orange, white and green we fly, colors bright against the sky. Freedom comes with every dawn, celebrate till night is gone. India, oh India, oh India, land of promise and of lights. India, oh India, land of promise and of lights. India, oh India, land of promise and of lights. India, oh India, shine so bright with all your might. Oh, 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 with all your might. Oh, 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 with all your might. India, oh India, land of promise and of lights. India, oh India, shine so bright with all your might. Thank you. सुप्रभात. आपल्या इंग्लिश हायस्कूल या शाळेचे आदरणीय संस्थापक, शाळेचे मुख्याध्यापिका, प्रमुख पाहुणे, सर्व शिक्षक शिक्षिका तसंच शिक्षिकेतर वर्ग आणि माझ्या प्रिय मित्र मैत्रिणींनो, तुम्हा सर्वांना 15 ऑगस्ट स्वतंत्र दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आजचा दिवस आपल्या जगण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे, कारण आजच्या दिवशी 1947 साली आपला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला. भारत देश हा विविधतेने नटलेले देश आहे. आपल्या देशात भाषा, जाती, धर्म, वेशभूषा असलेले लोक एकत्र राहतात. प्रत्येकाचं राहणीमान वेगळे आहे आणि हेच आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य आहे. स्वतंत्र दिन म्हणजे आपण एका राष्ट्र, एका ध्वजाखाली उभे राहून भारताला कोणत्याही देशापेक्षा चांगला देश बनवण्याची प्रतिज्ञा घेण्याचा दिवस आहे. देशाला स्वतंत्रता मिळून 78 वर्ष पूर्ण झाली आहे आणि या काळात देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आपली ठसा उमटवला आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, आर्थिक, कृषी, साहित्य, क्रीडा अशा सर्वांच्या क्षेत्रात आपल्या देशाने खूप प्रगती केली आहे. आपला देश केवळ क्रिकेटमध्येच नाही तर ऑलिम्पिकमध्येही चांगली कामगिरी करत आहे. परंतु आपल्या देशात आज ही गरिबी आणि बेरोजगारी आहे. शिक्षण आणि कौशल्याअभावी लोकांना रोजगार मिळत नाही. वाढते प्रदूषण आणि नैसर्गिक संसाधनाचे ऱ्हास हे गंभीर समस्या आहे. त्यासाठी आपण पर्यावरणाची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
जातीभेद, लिंगभेद आणि इतर सामाजिक विषमतेमुळे समाजाला धोका निर्माण होतो. सर्वांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचारामुळे देशाचा विकास थांबतो. देशाला भ्रष्टाचार मुक्त बनविले प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यातून आपण देशाचे चांगले भविष्य निर्माण करूया. आपल्या देशात असलेल्या लैंगिक सामाजिक समानता, न्याय आणि सर्वांसाठी समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी आपला टप्पा गाठायचा आहे. प्रत्येकाला चांगले आरोग्य सेवा व मिळून महामारी आणि आजारांपासून बचाव करण्यासाठी आपल्याला उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. भारतीय इतिहासात तो दिवस अमल झाला. 15 ऑगस्ट 1947 ला आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. पुन्हा एकदा सर्वांना स्वतंत्र दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. जय हिंद, जय भारत. सदर मोहतरम काबिल एहतराम मैनेजमेंट मेंबरान, मोअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल साहिबा, असातिज़ा इकराम और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम. मैं तथीर फातिमा, जमात सुवम से सबका इस जश्न आज़ादी के मौके पर आप सबका इस्तकबाल करती हूँ. इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना. रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना. लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना. आज का दिन सिर्फ एक तकरीम नहीं बल्कि एक अज़्म कुर्बानियों की यादगार का दिन है. ये 15 अगस्त वो दिन है जब हमारी धरती ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का सूरज तुलू होते देखा. मोअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं. आज हमारा दिल खुशियों से लबरेज, हमारे सीने मुसर्रतों से मामूर, हमारी आंखें नसअत से सरसार है. क्यों ना हो, आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी लानत. हिंदुस्तान वह सरजमीन है जिसने सदियों तक जुल्म और सितम की आंधियों को सहा लेकिन कभी सर नहीं झुकाया. उस वक्त की फिजा में एक यही सदा गूंजती थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. दोस्तों, ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली. ये दिन जान निसारों की बख्शिश है जिन्होंने अपने जवानी, अपने खौफ और हत्या के अपने जाने निछावर कर दी. कौन भूल सकता है महात्मा गांधी का इनकलाब जिंदाबाद का नारा. कौन भूल सकता है अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी की सजा. कभी वो गोलियों के सामने सीने सपर हो गए, कभी वो गोलियों के सामने सीने सपर हो गए, कभी वो तनायों में झूल कर अमर हो गए. आज़ादी का मतलब सिर्फ जंजीरों से निजात नहीं था बल्कि एक ऐसा निज़ाम कायम करना था जिसमें हर मर्द को बराबरी, इंसाफ, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार हासिल हो. लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने उन कुर्बानियों का हक अदा किया है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने किरदार, अपने अमल और अपने सोच से इस वतन की खिदमत करें. हम तलबा का सबसे बड़ा हथियार है इल्म, अखलाक और कौमी शऊर. अहद करें कि हम आला तालीम हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे, अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और किसी भी हालत में इसकी इज्जत पर आँच न आने देंगे. ऐ वतन, हम तुझसे वादा करते हैं, ऐ वतन, हम तुझसे वादा करते हैं, तेरी इज्जत पर कभी आँच न आने देंगे. आए हम सब मिलकर उन शहीदों, मुजाहिदीन, सिपाहियों पर हर फर्द को सलाम पेश करें जिन्होंने हमें ये दिन देखने के काबिल बनाया. ऐ वतन, तेरे लिए ये दिल भी फिदा कर देंगे. ऐ वतन, तेरे लिए ये दिल भी फिदा कर देंगे. जा भी हो तो तेरे राह में नजर कर देंगे. जय हिंद, जय भारत. आप सबका बेहद शुक्रिया. ये बे आज़ादी के दिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद. हिंदुस्तान का नारा जग भर गूंजतोय,
आमचा तिरंगा आसमान फळकतोय. सन्माननीय व्यासपीठ आभारी मान्यवर, वंदनीय गुरुजन वर्ग आणि येथे उपस्थित माझे देशबांधवांनो सर्वांना माझा नमस्कार. माझे नाव झारा आहे. मी इयत्ता 4थी मध्ये शिकत आहे. आज 15 ऑगस्ट आपण सर्वजण आज इथे भारतच्या 79वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. सर्वप्रथम सर्वांना भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट हा दिवस भारतातील प्रत्येक नागरिकांसाठी उत्साहाच्या, सन्मानाच्या व अभिमानाचा आहे. 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. हा दिवस भारताच्या इतिहासातील सुवर्ण दिन होय. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेक स्वतंत्र सैनिकांनी बलिदान दिले. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंग, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस अशा अनेक क्रांतिकारकांनी आपले प्राण पानाला लावले. आज आपण मुक्तपणे श्वास घेतोय त्याचे सरश्रेय या देशपुत्रांचे आहे. अशा थोर स्वतंत्र सैनिकांना माझा प्रणाम. आजच्या दिनी भारताचे पंतप्रधान लाल किल्ल्यावर भारताचे राष्ट्रध्वज फडकवितात. सर्व ठिकाणी हा सण राष्ट्रीय सन्मानाने साजरा केला जातो. चला तर मग आपण सर्वजण एकत्र येऊन भारतला एक आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम देश बनविण्यासाठी प्रयत्न करूया. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. सत्रह शान मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और सामईन बातमकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मिली है जितनी जिंदगी वो आएगा न जाएगी, मेरे लहू की बूंद बूंद तेरे ही काम आएगी. रचा है मेरी रूह में तेरा ही प्यार ए वतन, निसार तुझ पे जा मेरी हजार बार ए वतन. तेरे हुजूर सरबखम मेरी हर एक चीज है, ये दिल तेरा गुलाम है, ये जा तेरी कनीज है. ये दिल तेरा गुलाम है, ये जा तेरी कनीज है. मेरे प्यारे हमवतनों, आप सबको यौम आज़ादी पर ने ख़ैशात. आज का दिन हिंदुस्तान के फख्र, खुशकिस्मती और इज्जत का दिन है. आज का दिन एक तारीख साज़ लम्हा है, एक रूह परवर साथ है, जिसे हम यौम आज़ादी के नाम से जानते हैं. 15 अगस्त सन 1947 का सूरज तुलू हुआ तो वो सिर्फ एक दिन का आगाज न था, बल्कि सदियों की गुलामी का खात्मा और सुबह आज़ादी की नवीद लेकर आया था. ये वही आज़ादी का दिन है जिसके खातिर हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियां पेश की. ये वही आज़ादी का दिन है जिसके खातिर हमारे असलाफ ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया. ये वही मुबारक दिन है जिसके ख्वाब उन हजारों सरफरोशान वतन ने देखे थे जिन्होंने इस मुल्क को गुलामी के लानत से निकालने के लिए अपना सब कुछ तज दिया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है. मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं. वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है. हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं. हाज़िरीन इकराम, हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी एक दिन में नहीं उठी, बल्कि यह सदियों मुहित वो जंग है जो सन 1857 की पहली जंग आज़ादी से लेकर सन 1947 तक जारी रही. हर दौर में कुर्बानियों की नई तारीख रकम होती रही. सबसे पहले हमें उन आज़ाद पसंदों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ खतरे में डाल दिया. यह दिन हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, भगत सिंह,
اشفاق اللہ خان, محمد عبدالرحمان, ڈاکٹر ذاکر حسین, چندر شیکھر آزاد, رام چندر بسمل, ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر, سراج الدولہ, شجاع الدولہ, ٹیپو سلطان, شاہ ولی اللہ, شیخ الاسلام, مولانا حسین احمد مدنی, منگل پانڈے, سردار ولبھ بھائی پٹیل اور سبھاش چندر بوس سمیت سینکڑوں عظیم آزاد پسندوں کی یاد دلاتا ہے. مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو, مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو, ان شہیدان وطن کو بارہا میرا سلام. آج یوم آزادی ہند ہے. یہ تہوار ہمارے دلوں میں نئی توانائی اور نیا جوش پیدا کرتا ہے, مگر یہ دن صرف مسرت اور خوشیاں منانے کا نہیں ہے, بلکہ آزادی کے ان متوالوں اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جن کی لافانی قربانی کے نتیجے میں آج ہمیں آزادی نصیب ہوئی ہے. لیکن حیرت افسوس ان افراد پر جو درس آزادی کو بھلا دیتے ہیں, جو فتنہ و فساد کو اپنا شعار بناتے ہیں. قانون قدرت ہے جس کو ان کا ضمیر مر جاتا ہے, جس کو ان کا احساس مر جاتا ہے اور وقت سے پہلے مر جاتی ہے. سامعین کرام, آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں, جبکہ مہنگائی, بے روزگاری, غریبی, جہالت اور فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے. ایسے ماحول میں, ایسے فضا میں ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیر غلامی کی, ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیر غلامی کی. دن آ جاتا ہے آزادی کا, آزادی نہیں آتی. یوم آزادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک عہد ہے اپنے ملک سے, اپنی مٹی سے, اپنے فرائض سے اور اپنے ضمیر سے. میرے ساتھیوں, قوم کی اصل طاقت تم ہو. تمہارے ہاتھوں میں قلم ہے, تمہارے دلوں میں جوش ہے, تمہارے سوچ میں انقلاب ہے. یہ وطن اب تمہارے ہاتھوں میں ہے. تمہارے فیصلے, تمہاری سوچ, تمہارے اعمال یہی ہندوستان کا مستقبل طے کریں گے. ہمیں اپنے شہیدوں کے خون کا قرض اپنے کردار سے چکانا ہے. آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ افراد کی زنجیروں کو توڑ کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک نئے بھارت کی بنیاد رکھیں گے. تیرے آنکھوں میں اب اے نگارے وطن شرمساری کے آنسو نہیں آئیں گے. ہم کو تیری قسم اے بہارے وطن اب اندھیرے سفر کو نہ دہرائیں گے. گر کسی نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا, اس کے راستے کی دیوار بن جائیں گے. اے زمین وطن, اے زمین وطن, جان دے کر تیرا نام کر جائیں گے, جان دے کر تیرا نام کر جائیں گے. جے ہند. اللہ حافظ. علی گربان. آدیش مازایات سے بات ذرا سے راہو دیا رے, ذرا سے راہو دیا. آدیش مازایات سے بات ذرا سے راہو دیا رے, ذرا سے راہو دیا. ہا انس ہمالیہ مازا, ہا وشال ساگر مازا, ہا انس ہمالیہ مازا, ہا وشال ساگر مازا. یا گنگا یمنا شیتی دھرتی باغ بگیچہ مازا, یا گنگا یمنا شیتی دھرتی باغ بگیچہ مازا. ابھیلاشا یاچی دھریتا کونی نظر واڈلی کریتا, ابھیلاشا یاچی دھریتا کونی نظر واڈلی کریتا. یا مرن دھاورا سفر آپلے باہو باہو دھیارے. ہا دیش مازا, ہا دیش مازایات سے بان ذرا سے راہو دیا رے, ذرا سے راہو دیا. ہا دیش مازایات سے بان ذرا سے راہو دیا رے, ذرا سے راہو دیا. ہے ہاتھ اتسک لے لے دگڑانچا ورشا والا, ہے ہاتھ اتسک لے لے دگڑانچا ورشا واला. रोका तेलावा कार्यालया देशाचा प्रगतीला, रोका तेलावा कार्यालया देशाच्या प्रगतीला. हे बंद करा उत्पाद थांबवा पुला घाट, हे बंद करा उत्पाद थांबवा पुला घाट.
येऊ द्या रे हा देश माझा, हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, जरासे राहू द्या. हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, जरासे राहू द्या. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन. ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी. जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो. फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा. सो गए अमर बलिदानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली. जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली. थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जय हिंद. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning to all of you, respected principal, the management, the staff, students, and if there are any other citizens, even the class 4 employees over here. It's a great honor. It's a great privilege. It's not only about the 79th Independence Day. I would like you all to guess what is so different about you all celebrating this 79th year of independence. What is the difference between the previous Independence Day that you have celebrated and this one? You are celebrating this Independence Day in your new school building. And it is such an honor. It is such an honor, and I think heartfelt gratitude to all the people who are involved in this project. For all the efforts, for all the courage, heartfelt gratitude for y'all to really come up with this project. I had written a long speech to deliver, but when I heard all the speeches, I found that everything is being covered, that is so beautifully portrayed by each and every one. Right? So I just want to say in very few words that when the flag flutters high,
it is a pride. It is a proud moment for all Indians. Our aspirations, our patriotism all goes very high. Let it remain that high. It should not be lowered. All the patriotism surfaces on this one day, and after that everything is forgotten. No. We have to be proud Indians on each and every day that we are here. Our country has given us so much. The flag itself, the three colors that are stitched together. It is not just or saffron and or white and green. Each color denotes something. Each color here speaks of something. The courage, the prosperity, the inclusivity, the progress that has to continue every moment. We cannot let down our spirits at all. Jawaharlal Nehru's speech, someone has covered very beautifully. I will not repeat that tryst with destiny because it is a very famous speech. I love it. As a history teacher, I just love that speech. But there are so many other quotes of Pandit Jawaharlal Nehru, and one was that children are like the buds. We have to nurture them with love and care. And they are going to be our future. We all know that you are the torch bearers of our hope for tomorrow. Right? If you are going to be steadfast, if you are going to make it a point, as you all said, that we are free from the foreign rule. Yes, we are celebrating Independence Day, but we are celebrating that only because we are free of the foreign rule. But yet, we are to be free from a lot of other things. And as I have just noticed, the students have mentioned everything that needs to be mentioned. That you need to be free from corruption. We need to be free from unhygienic conditions. We have to free ourselves from abusive thoughts. You have to be inclusive. You have to be tolerant. Right? So you are going to take that. The country has given us a lot to be proud of. We are proud of our country for all the privilege that it has given. Right? But now we have to have a mutual love for the country. You have to do something that the country is proud of you. So every step you are going to make towards making your country proud of you. Thank you so much for having me. It was indeed a great pleasure to go through every speech, every activity, every event. We all, I will say, I will take the opportunity and the privilege of representing the ones who are sitting over there with me. We have actually enjoyed and we really appreciate the effort of not only the students, it is also the teachers and the parents who support all that. So a big shout out to everyone who has actually put up this event. It was marvelous. Thank you so much once again. Assalamu alaikum. Good morning, Alpha. A very happy Independence Day to all my dear students, teachers, staff, and fellow members. Today, as we watch a Tiranga rise high, let us remember it does not fly alone with the wind. It flies because of the sacrifices, courage, dreams of countless men and women who gave everything for our freedom. This freedom is precious. And with freedom comes responsibilities. Responsibility to be disciplined, responsibility to work hard, and responsibility to respect the blessing we had. And one of the blessings is our beautiful school. With modern classrooms, smart panel, well-equipped library, sports facility, it stands among the best in our area. But a great school becomes even greater when its students care for it. This is your school. Keep it clean, protect its property, and use its resources wisely. Always remember, you are the future of India.
what you learn, how you act, and the values you follow will decide the strength of our nation tomorrow. Now let's make a promise together. Students, you will repeat after me loud and proudly. Even teachers can repeat loud and proudly after me. I pledge to love my country. I pledge to respect my elders and teachers. I pledge to take care of my school and its surroundings. I pledge to work hard and be honest. I pledge to be a proud, responsible citizen of India. Now let's shout together, Jai Hind. Thank you. As we come to an end of this proud celebration of 79th Independence Day, on behalf of Alpha English High School, I extend my heartfelt gratitude to our honored guests, our management members, respected principals, dedicated teachers, our talented performers, all these students for making this Independence Day celebration truly memorable. Thank you all.